Assalamu alaikum, all the students of standard 5th. I heartily welcome to all in my EVS class. Today first I will reading and then I will explain you this topic. I hope you will understand this topic. Okay students, your lesson name is evaluation. Evaluation means something. Evaluation meaning is जनरली अंडरस्टूड द मीनिंग ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूअस चेंजेस यानी बिगिनिंग ऑफ लाइफ. तो इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया, इस थ्योरी को किसने डिफाइन किया, ये थे चार्लेस डार्विन. ओके, चार्लेस डार्विन प्रपोज दिस थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. बिफोर डार्विन द साइंटिस्ट कार्ल लिनियस हैड इंट्रोड्यूस हिज मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स. चार्लेस डार्विन से पहले भी एक जो साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किए थे क्लासिफाइंग ऑफ एनिमल्स. उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले किए थे, मगर उन्होंने इसको मतलब पूरा वाइडली एक्सप्रेस नहीं किए थे. तो फिर इस थ्योरी को चार्लेस डार्विन ने वाइडली एक्सप्रेस करे. ही हैड एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट गोइंग बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी द ह्यूमन स्पीशीज एंड सम एप स्पीशीज appeared to be related. In his first book, Darwin had not expressed any definite opinion about this relationship. In 1871, he published his second book, The Descent of Man. In this book, he drew attention to the fact that even though humans do not have tails, the last bone of their spine is a vestige of a tail. He also noted that some other non-functional or unnecessary structures in the human body, such as the wisdom, teeth, are indicators of the process of evolution. He accepted the inference that humans had evolved from tails. Apes like the gorilla and the chimpanzee that live in the jungles of Africa. However, no evidence had been found till then in support of his theory. The necessary evidence become available only in the 20th century. तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और क्या पढ़ा था हमने, द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स. द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स में हमने इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को पढ़ा था. इनवर्टिब्रेट्स मीन्स एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन और वर्टिब्रेट मीन्स एनिमल्स विच हैव अ बैकबोन. तो आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मैमल्स. मैमल्स की एग्जाम्पल है काउ. मैमल्स आर द मोस्ट इवॉल्व एनिमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट मीन्स विच हैव अ बैकबोन. ओके स्टूडेंट, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स. फर्स्ट इज growth of the baby in the mother's womb for some time before birth, and second is the baby is fed on the mother's milk for some time after the birth. मैमल्स की जो 2 एग्जाम्पल्स है, यानी जो मैमल्स से बेटा वो बेबी को अपने वॉर्म में रखकर बर्थ करते हैं, और उसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल है मदर्स जो है अपने बेबी को मिल्क जो है फीड करवाते हैं. ये मैमल्स की बेस्ट मैमल्स को इसमें क्या है तो कैरेक्टर्स में डिफाइन किया गया, और मैमल्स की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है काउ. एंड सेकेंड है ए प्लैटीपस. ए प्लैटीपस, जो प्लैटीपस है, द प्लैटीपस एंड सम स्पीशीज ऑफ एंटीएटर. एंटीएटर और प्लैटीपस, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये एंटीएटर है, और उसके ऊपर जो आपकी पिक्चर जा चुकी है वो प्लैटीपस है. द प्लैटीपस एंड सम स्पीशीज ऑफ एंटीएटर आर एक्सेप्शन टू दिस. They are considered mammals because even though they lay eggs, they suckle their young ones. And next is apes. Apes are somewhat like humans in appearance. They mostly live on trees. Those species of apes which continue to live on trees retain their original ape-like form. However, in grassland, some ape species were forced to move around on the ground. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. This happened first on the African continent. The first human species is called the primitive
man. Primitive man. Primitive means the first. In the next lesson, we shall learn more about the evolution of the human species. Okay, students? And next is your homework. Fill in the blanks. The first systematic explanation of the concept of evaluation was given by Charles Darwin. आपके fill in the blanks में जो है the first systematic explanation of the concept of evaluation was given by Charles Darwin. Second blank is dash are the most evolved animals among vertebrates, aquatic. और नीचे जो है आपके answer each questions in one sentence. What do we call animals which live in water and also on land? यानी आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन सा एनिमल्स है, आप वो कौन सा एनिमल है जो पानी और लैंड पर भी रहता है, तो आप क्या कहेंगे? एम्फीबियंस. एंड नेक्स्ट इज वेयर डिड द फर्स्ट ह्यूमंस अपीयर, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. थैंक यू स्टूडेंट्स. I hope you will understand.